Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Shall we begin? मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे प्लीज मॉडरेटर्स जो भी हैं प्लीज बता दें अगर शुरू करना है या किसी का वेट कर रहे हैं. Yeah, I'm waiting for a response from the moderators. Please let me know. Can I start the lecture or are we still waiting for other people to join in?
मुझे नहीं पता कि मॉडरेटर्स जो हैं वो यहाँ पे विजिबल पे मौजूद हैं या मौजूद नहीं है. बहरहाल I'm starting with the gender-based violence. Since gender-based violence is a very big topic, and it actually entails a lot of avenues, not only under the law, but it also deals with the sociology, psychology, criminology, and also economics and economical restraints on a particular uh, population in the world, जिसको जेंडर के बेस के ऊपर डिवाइड किया जाता है. क्योंकि हमारा ताल्लुक वकालत से है और हम कानून के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं और उसको समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो टर्म है पाकिस्तान के अंदर, इसको सिस्टमैटिकली अभी कुछ अरसा पहले इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी अरसे से मौजूद है. This is something which has been affecting the human rights of individuals for a very long time. However, as quoted by the UN, it is one of the most underrated and unrecognized human rights violation around the globe, which is not considered as human rights violation, and it is given the cover of customs, culture, and traditions and religion. And all of these terminologies have been used as an excuse and validation to cover up violations toward a particular gender. It turns into violence because of underlying factors जो के इसके justification के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं. Now, when we talk about gender-based violence, the definition is very important. The United Nations has defined gender-based violence as a violence which impairs the rights of women and girls and their fundamental rights, particularly to their right of dignity. This is something which is a legal definition. लेकिन अगर इसका सोशो साइकोलॉजिकल एंड उसका जो जर्नल कॉन्सेप्ट अगर समझना है, तो यूनाइटेड नेशन की जो डेफिनेशन है GBV या जेंडर बेस्ड वायलेंस की, वो ये कहती है कि इट्स अ हार्मफुल एक्ट which is directed to an individual based on their gender identity. This is a very flexible definition, and it includes not only women, children, but it also includes people who have a gender identity which goes against the norms of the society जो हमने अपने लिए create किए हुए हैं. For example, transgender community in the recent years have been subject to violence because of their gender identity, and gender identity is always self-perceived. तो उस सेल्फ परसेप्टिव जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर वायलेंस जो है सोसाइटी का, वो इस ग्राउंड्स के ऊपर होता रहा है कि जी दिस इज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द society. So any violation or any violence or any disregard to the basic fundamental rights of any individual which is being used under the justification of their gender is termed as gender-based violence. Now, the root causes of gender-based violence, as researched and identified by, again, United Nations, is that it is a systematic gender inequality in the system, in the culture, or in the country, and it could be in the shape of physical violence, sexual violence, economical violence, and psychological violence. Now, this is an incorrect perception that gender-based violence is only physical. यानी कि अगर आप किसी को मारेंगे या अगर आप उसको फिजिकली नुकसान पहुंचाएंगे तो सिर्फ वही वायलेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है. जेंडर-बेस्ड वायलेंस एक्चुअली इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज एंड अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल वायलेंस भी शामिल है. पाकिस्तान के अंदर since 2019 till 2023 there have been a number of landmark judgments wherein the apex courts have taken the subject of gender-based violence into another level, and there are certain judgments जो इस बात को acknowledge करते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो gender inequality है उसकी वजह से
एक पर्टिकुलर तबका या एक पर्टिकुलर सेगमेंट सोसाइटी के अंदर अपनी पावर को मिसयूज करता है, और उस पावर को मिसयूज करते हुए वो उस तबके को डिमोरलाइज या अफेक्ट करता है जो वनरेबल है और जो अपने राइट्स की मतलब अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है, या उसको अपने हुकूक हासिल करने के लिए किसी किस्म की जद्दोजहद करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे राइट टू इनहेरिटेंस, आपका जो राइट टू इनहेरिटेंस है, इट इज जेंडर नॉन बाइनरी। एवरीवन who is entitled to inheritance as per the Sharia law is entitled to inheritance despite of their gender. But we have seen in Pakistan that the woman has to struggle for getting her share in inheritance. And in a lot of cultures, domestic cultures, we have seen that women are not given their share in the inheritance on the grounds simply कि हमने आपको बड़ा किया है, हमने आपकी एजुकेशन पे पैसे लगाए, हमने आपकी शादी की, तो आपका जो इनहेरिटेंस है वो उसी के अंदर यूटिलाइज हो गया। दिस इज अ जेंडर बेस्ड वायलेंस बिकॉज द राइट ऑफ अ वुमन इज of inheritance, which is economical right, is being curtailed on the basis of her gender. Similarly, if a woman applies for a competitive position and she is not being treated as a valid candidate based on her gender, that is also gender-based violence. If a particular job post does not recognize any specific gender who can apply for that position, and while the interview is happening, the interviewer discredit the female candidate on the basis that because you're a woman, we don't think that you should be considered for this position. This is again economical bias or economical inequality, and that can be termed as gender-based violence. So like I said in the beginning, the gender-based violence can be of different types and different forms, और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सम अप करना मुश्किल है। अगर किसी का अभी तक कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझे बता दें, अदरवाइज देन आई विल जस्ट गो and highlight how gender-based violence has been interpreted by the apex courts. No one has any questions? In 2019, Supreme Court has taken up a matter from the National Commission on Status of Women. And this particular judgment of the Honorable Supreme Court revolves around the Jirga and Panchayat and the councils for elders where settlements were happening in cases of murder, and women were been given as Badrisula, which is a violation under the Pakistan Penal Code. But despite that, there was a violation, and it is a penal offense under the Pakistan Penal Code, and the Penal Code actually provides for a very heinous punishment if a woman is being given as Badrisula. And despite of that, culturally it was happening, and settlements were taking place in the Jargas and then the Panchayats, जहाँ पर ऑनर किलिंग या मर्डर के केसेस के अंदर जो है वो इस किस्म के फैसले दिए जा रहे थे। और इसका दूसरा पहलू ये था कि काफ़ी सारी ख़वातीन को या औरतों को मजबूर किया जाता था कि जी आप एक पर्टिकुलर घर के अंदर शादी कर लें, ताकि जो है हमारा जो डिस्प्यूट है उनके साथ, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो या वो चाहे किसी और पीनल वायलेशन से रिलेटेड हो, वो हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। और इसके अंदर एक चाइल्ड मैरिजेस का भी एस्पेक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जजमेंट के अंदर, जो कि एक बहुत डिटेल्ड जजमेंट है, ऑथर्ड बाय द देन चीफ जस्टिस मिस्टर साकिब निसार एंड इजाजुल हसन साहब, और इन्होंने इस जजमेंट के अंदर ये होल्ड किया कि ये जो फॉर्मेशन है जिरगा की या पंचायत की, कि वो बैठकर इन चीज़ों के ऊपर फैसले दे रहे हैं जिसके अंदर पीनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको बैन किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और अगर जिरगा और पंचायत काम करना चाहते हैं फॉर मीडिएशन, या अगर वो लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं ऑन द ग्रास रूट लेवल, तो वो जो मसाइल हैं वो सिर्फ सिविल रॉन्ग्स को हल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ये कोई राइट नहीं है कि वो
पीनल कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करें या लोगों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो अपनी बच्चियों की शादियां एक पर्टिकुलर घर में कराएं, खासतौर पे जहाँ पे उस औरत की मर्जी शामिल नहीं। ये जजमेंट पाकिस्तान की तारीख में खासतौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस का सब्जेक्ट पढ़ने वालों को या जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रैक्टिस करने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर जेंडर इनइक्वालिटी होगी और अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस होगी तो उसको यही इसी तरीके से कंसिडर किया जाएगा जैसे कि आप आम तरीके से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को डिटरमिन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि जी डिग्निटी ऑफ मैन, तो डिग्निटी ऑफ मैन के अंदर अगर अगर किसी औरत को उसका बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा तो उसको कोर्ट्स वैसे ही ट्रीट करेंगी जैसे आप एफआईआर के लिए जाते हो और आपकी एफआईआर नहीं करती और कोर्ट्स इंटरवीन करती हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से इस बात को ट्रीट किया जाए अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। उसके बाद एक और जजमेंट है जो फिर से इस जेंडर बेस्ड वायलेंस के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द जजमेंट पर्टेन्स टू सवारा बनी की जो रस्में होती हैं बदले सुलह के अंदर खवातीन औरतों को दे देने वाली, जो कि अगेन ऑफेंस है सेक्शन 310 ए पीपीसी के अंदर और जिसके अंदर सजाएं मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद कल्चरली इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, कल्चरली इस चीज को अलाउ किया जाता था। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2022 पीएलडी 2022 एफएससी पेज नंबर 57 के अंदर एक जजमेंट दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो रस्में हैं ये बेसिकली it's a systematic violence against women and it exists in our country because we are in disregard of female right to choose or the female right to marry, and also this also signifies the mindset of people who practices this kind of culture, that they think that woman is a thing which can be traded फॉर अ कॉस्ट। जैसे आप भेड़ बकरियों को ट्रेड करते हैं, आप उस तरीके से उनको ट्रेड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। एंड दिस जजमेंट फेडरल शरीयत कोर्ट हैज हेल्ड कि अगर इस किस्म की प्रैक्टिसेस हो रही हैं अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन, दिस इज all wrong because the religion does not allow such practices, and it is all of that is again un-Islamic, and you can't have these cultures or you can't have these customs under the garb of religious practices. तो ये जजमेंट जो है काफी इम्पोर्टेंट रही है। उसके बाद 2021 पीसीआरएलजे पेज नंबर 205 जस्टिस आयशा मलिक की जजमेंट है। दिस इज अगेन अबाउट वुमेन डिग्निटी एंड ऑनर and also it pertains to dignity of the victim irrespective of her gender. सेक्सुअल ऑफेंसेस या सेक्सुअल वायलेंस के अंदर जो रेप के केसेस होते थे उसके अंदर 2 फिंगर टेस्ट के नाम से एक टेस्ट था जो वर्जिनिटी डिटरमिन करता था विक्टिम की, और उस वर्जिनिटी डिटर्मिनेशन का बेसिक क्राइटेरिया ये था कि इफ द विक्टिम इज अ वर्जिन then she will automatically be considered as a woman of virtue, and if she is not a virgin she will not be considered as a woman of virtue, and because she is not a woman of virtue automatically the entire case of rape will collapse, because then the defense counsel can argue the premise of consent. So Justice Aisha Malik in this judgment, after deliberating on number and numerous of issues, she has come to this conclusion that this is violence against a woman because this is degrading. पहली बात तो ये कि the way this test is performed, this is against the dignity of the victim. के टेस्ट परफॉर्म जिस तरह से किया जाता है, एक तो ये अनकंक्लूसिव है, आप इसकी कंक्लूसिविटी के ऊपर कोई कंसेंट नहीं प्रूव कर सकते किसी के वर्जन होने या ना होने से। तो ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इट डिग्रेड्स द विक्टिम, इट पुट्स द विक्टिम अंडर दिस perception that the system does not respect her grievance, and because of this it puts the woman especially under this concept के उसका जो केस है वो इस बात के ऊपर बेस करता है कि उसका वर्च्यू क्या है। तो इस टेस्ट को लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया under this judgment 2021 PCRLJ 205, and the Lahore High Court has declared 2 finger test as illegal and unconstitutional.
and has declared this particular test that it is actually a systematic violence against a woman. Uske baad, this is a very interesting judgment. It's a recent judgment, again, of Lahore High Court, PLD 2023, Lahore, page number 171. This is a very interesting case. Iske facts jo hain wo bade, actually, these are very sad facts. So there was a contract between two individuals जिन्होंने एक मर्डर केस के अंदर एक अक्यूज के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे, और एज अ गारंटी उन्होंने उनसे एक चेक लिया, और उन्होंने जो अक्यूज थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया, और वो जो चेक था वो बाउंस हो गया। तो जिन्होंने अग्रीमेंट करवाया था उनसे वो चले गए जस्टिस ऑफ पीस के पास, और उन्होंने एक एफआईआर को ऑर्डर ले लिया कि जी ये जो चेक था ये बाउंस हो गया था, और इस चेक के ऊपर ये ही वाज ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म दैट चेक, और उसके ऊपर जस्टिस ऑफ पीस ने जो है एक ऑर्डर पास कर दिया कि जी 489F की आप एफआईआर इनके अगेंस्ट में लॉन्च कर दें। The matter was taken up to the Lahore High Court, and Lahore High Court has passed this judgment, where the Lahore High Court has not only declared that the order of the Justice of Peace is unconstitutional, but also elaborated on the point of 310A, which is again one of the biggest assurances in the Pakistan Penal Code regarding the gender-based violence and trading of women, under the custom of money, savara, and जो खवातीन को शादी के लिए बदले सुलह के तौर पर इस्तेमाल करने का है। फिर उसके बाद ये जजमेंट और मजीद इलेबोरेट करता है सोशल नॉर्म्स एंड सोशल इवल्स को, जहाँ पर डिफरेंट तरीके से जो राइट्स हैं उनके अंदर इनइक्वालिटी दिखाई जाती है, पे के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर, उसके अलावा बगैर कंसेंट के या बगैर लड़की की मर्जी पूछे उसकी शादी कर देने पे, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया। एंड इट गोज इनटू द माइन्यूट एग्जामिनेशन, और इवन इफ द डवर अमाउंट जो हक महर है जो तय करता है फैमिली तय करती है, व्हिच इज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ अ वुमन अंडर द शरिया लॉ, एंड इवन द निकाहनामा के अंदर जो उसके जो राइट्स हैं ऑफ चूजिंग of having talaq tafweez, and the second page which is always struck down by the qazi during the nikah proceeding, and this judgment goes on and discusses all of that. One of the biggest one of the things that I really liked about the judgment, if you open the judgment, it starts with this very interesting quote, and it says that I represent Fatima Zahra Mariam Rabia Basri and showed your survival and your race continuity, bore the burdens and hardship throughout, yet I was treated as a merchandise without doubt. Why weren't my rights recognized by others? Why wasn't I given the rights I deserve? This is a poem, and this has been used as a quotation in the very beginning of judgment, that women are being used as a trade entity, or are being used as something which has value, but that value is monetary, that value is devoid of dignity and devoid of their fundamental recognition of respect as a human being, but it is a value which can be monetized by a man, or by the other counterpart, making sure that they benefit out of the existence of a woman, which is a very sad concept, and it actually opens the horizon of gender-based violence in Pakistan, because it happens very frequently in this country. Uske baad, the next judgment is again Federal Sharia Court. This is again a very interesting judgment. PLD 2023 Federal Sharia Court 1. The Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016 was challenged by the petitioner in the Federal Sharia Court, and the petitioner has contended before the Federal Sharia Court that this law is un-Islamic. And there are various provisions under this act which are devoid of Islamic injunctions, and therefore the law should be struck down. And the Federal Sharia Court unanimously has decided that no, the law is not un-Islamic, that it is well within the injunctions of Islam, because Islam gives a lot of rights to women which are not being given by the society. And the law actually protects gender-based violence towards women, and it actually entails domestic abuse, financial abuse, and harassment issues
perpetrated towards the woman, and that is why it is important to have a legislation. So all the arguments raised by the petitioner were declared to be invalid, and the Federal Sharia Court has decided that the state has a responsibility under Article 25 to ensure that equality of citizen is mandated in the law, irrespective of their gender or self-perceived gender, and women and children should be given special protection under the law because there is an element of violence against them. Uske baad, there was this another judgment. This is an older judgment. This is PLD 2016, Karachi, page number 268, a judgment authored by Mr. Justice Salahuddin Pawar. And this judgment actually revolves around the customs under the Sindh culture, जिसके अंदर कारोकारी के ऊपर जो है वो अगर फोर्स मैरिजेस होती थी, कारोकारी के इश्यूज थे और उसमें लड़कियां घर से भाग जाती थी, या अगर किसी लड़का लड़की ने आपस में शादी कर ली और वो प्रोटेक्शन लेने के लिए कोर्ट के अंदर आ जाते थे. So there were a number of cases in the High Court. All the cases were clubbed, and because the point of law was same, and the Sindh High Court has ruled that it is invaluable right of a woman to choose a partner, to have property, and if that is not being provided to her, and if she's being deprived of that right, it will be termed as violence, gender-based violence, because a man will not be deprived of this right to choose a partner. This exists because a woman is choosing a partner for herself. So this judgment actually ends up in giving directions to the government to ensure that the women are protected and their rights are protected, and they're given shelter homes, and the concerned authorities should ensure कि प्रोटेक्शन हाउसेज जो बने हुए हैं या शेल्टर होम्स बने हुए हैं, वहां पर जो खवातीन रह रही हैं पनागाहों के अंदर, उनको वहां पर उनके जो रहने के हालात हैं वो डिग्निटी ऑफ मैन के हिसाब से होने चाहिए. उसके बाद ये एक बहुत पुरानी जजमेंट है 1981 PCRLJ आजाद जम्मू कश्मीर की, जिसके अंदर कोर्ट ने रेप के केसेस के अंदर एक बहुत ही सिवियर स्टांस लिया, और उन्होंने कहा कि जी रिडक्शन ऑफ सेंटेंस की रिक्वेस्ट की थी अक्यूज ने कि जी रेप का ऑफेंस है और सेंटेंस जो है वो डिडक्ट कर दी जाए, लेकिन कोर्ट ने जो है वो सेंटेंस इनहेंस कर दी बाय सेइंग दैट, एंड दिस इज 1981, जब ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो काफी डिलूजनल थे, एंड इट वाज नॉट दैट इतने ज्यादा लाइमलाइट के अंदर नहीं थे जिसको जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं. एंड दिस जजमेंट हैज सेड कि डिफेंसलेस फीमेल के ऊपर एक मर्सीलेस एक अटैक होता है जिसको आप उसके ऊपर आप आके ये प्ली नहीं मांग सकते कि जी बिकॉज उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स मिसिंग थे तो लिहाजा आपकी सेंटेंस को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए. तो कहने का मकसद ये है कि अगेन जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक हिस्से के अंदर या एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर बंद करना बहुत मुश्किल है. पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड चैप्टर्स मौजूद हैं जिसको हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी कहते हैं, जिसमें हरासमेंट, रेप, abduction of women, kidnapping of women, outraging the modesty of women के नाम से हमारे पास मौजूद हैं abortion, induced abortion, इसकाते हमल के जो सेक्शन मौजूद हैं. उसके अलावा 3-110 उसके अंदर खवातीन को ट्रीट किया जाता है as बदले सुलह. So all of these guarantees are available in the Pakistan Penal Code, and this is what gender-based violence is. And Sindh also has a specific law on protection domestic violence, which is again one of the branches of gender-based violence, where women are being protected from their partners from any kind of violence, and not only from their partners but also from their extended families, etc. And the law provides protection to that woman. So if there is any other question which is related to this, I would love to answer.
कि अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो दैट इज ऑल फ्रॉम मी. कैन आई क्लोज द.